bonjour, bienvenue. We'll do a recording. It's better. When you have a doubt, stop me. Then we will have what? We'll have a detailed discussion. Okay. Now, merci is what? Thank you or thanks. And when you say thank you, it's delicious. Oui, merci, c'est délicieux. Oui, merci, c'est délicieux. Okay. Oui, c'est pour moi, merci. Yes, it is for me, thanks. And toujours is for what? Always. And okay, this S is silent and it is toujours. K is silent. I'm not going to see any toujours. In toujours, what you have? Toujours. KH sound is going to come last, and S is silent. Toujours. Toujours. And most of the participants still they could not catch this sound of ja. Ja. Okay. दांत नीचे के दांत थोड़ा बाहर निकाल के बोलना है. Protruding. Okay. Protruding बोलेंगे उसको इंग्लिश में. बाहर निकालते हुए. Ja. Ja. So वो कल भी जा कुछ और बोल रहे थे कुछ पार्टिसिपेंट्स. नो इश्यूज. उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा. या toujours. Okay, toujours, always, and then what you have? It is always extraordinary here. How you'll say that? Say toujours extraordinaire, extraordinaire ici, extraordinaire ici, extraordinaire. Okay, this first R is not going to have a sound of KH over here. I don't know why, but in this you have a sound of KH, extraordinaire, and some French accents go with extraordinaire, GH वाला sound, वाला sound निकाल रहे हैं. But we'll go with the KH sound, extraordinaire ici. Ce n'est pas toujours très beau ici. It is always very good here. It's always very good here. Okay. Then next what? Okay. Ce n'est pas pour moi, c'est toujours beau ici. I think it's always beautiful here. I think is for what? I think is what? Pour moi. Right? Pour moi. So when we say pour moi, c'est toujours beau ici, it means it's always beautiful here. For me. Okay, now next is what we learned this, and then we'll go with this slide. Is what? Parfait. Parfait. Now the sound of KH is here, and this is dominant. Okay, KH sound is dominant over here. So you will say KH parfait. Parfait. Okay. Okay. Next is what? Oui. Yes, it is absolutely perfect here. Perfect. Thank you. Oui. Say it's absolutely perfect here. So how you say? Oui, c'est absolument parfait, merci. Oui, c'est absolument parfait, merci. Oui, c'est absolument parfait, merci. Right? And then with today's session, we have completed this 7th session as a revision. Okay, what is that? That is what? Sa. And what is this called? What is this called as? This sign is called as under below the C. Below the letter C. Cedilla. Okay. And whenever they have a cedilla on the C, we don't follow any rule like C plus E and I. We have learned those rules, right? Those rules are not applicable. Cedilla overrides all the rules. So you say sa. The sounds of C will not be a ka or k or like no cat or kite. This sound will not come there. But the sound of S will become say, like S-A-Y say, that's S sound will come here. So sa, this is what? Sa. C with cedilla, and A is what? Sa, and you have that. Meaning of that is what? That. Okay, now next. When we say sa pour moi, that's for me. That's for me. That's for me. That for me. And that is for me means again the meaning will change. So that's the reason we are going with a simple sentence, that for me.
Okay, so in English, grammatically this is not correct, but actually we are trying to learn French and then translate it and understand it. So ça is that, for me is pour moi. Okay, pour moi. And here what we have learned, cedilla. Cedilla is a small hook, right? You can see here. We have a slide which shows us that C with a cedilla will have a sound of S, and C without a cedilla will have a sound of normally K sound. And we have the rules here. C plus E and I is what gives a sound of S, like say it is. Say is what it is in English. And cinema, okay, cinema is what? Same as cinema in English. And the cinema word is taken from there. Next example is what? Café, okay, concombre, 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 and curiosity, curiosity, curiosity. And examples are what? A, O, U. So we are trying to just tell you an example of if A comes after the C, if O comes after the C, and U comes after the C, which gives you a reason to make a sound of K. That's the rule. And to overcome all the rules that we have learnt over here in these two slides, we have to put cedilla and then make it a sound of S. And that is sa is that. Garçon, garçon, garçon is what? Boy. And facade is what? Facade. Facade is what? The front side of something, like building elevation, which have glasses on the buildings fixed. That is called as facade in English and facade in French. And the pronunciation of facade is same as facade in Urdu. We have sase, that is. That's the reason I said you that when we say that is, it will change. Sase is what? That. So that means sa is what? That. And se is what? Is. But okay, now you might say, the students who have learned in advanced sessions, this is what? 8th session. In the next sessions, again, this say will be learnt in 2 splits. Okay, this and this, right? We will be learning a new form after breaking this 2, splitting it. But for now, at the initial stage, it is ça c'est. And when you say that in French, say is obviously comes there. What happens? Say obviously comes there as a decent way of speaking in French. When we say what? That is beautiful. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Okay, ça c'est beau. This is what? Ça c'est pour moi. Okay. And then we have parfait. Parfait. No, आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं. देखिए आप अभी parfait बोले कोई, no issues. आप जो है दिमाग में रखना है. ये प्रोनाउंसिएशन को दिमाग में रखना है. अगर हम कल को हम ये प्रोनाउंसिएशन के बगैर भी पढ़ते हैं तो देन आपके दिमाग से खुद ब खुद निकलना है पखफे, पखफे. हाँ, ये आ जाएगा. लेकिन आप लोग सिर्फ इसकी दलील ये है कि मतलब सबूत मिल रहा है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की. बस प्रैक्टिस नहीं की. अभी आप बोल दिए करेक्टली पखफे, ओके, लेकिन वो बगैर प्रोनाउंसिएशन हालांकि यहाँ था उसके बावजूद भी आप बोले तो देन आप प्रैक्टिस नहीं किए. थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए. प्रैक्टिस है. स्नेपा fantastic, mais c'est très bon. It isn't fantastic, but it's very good. Okay, like now how you define in your feelings, yeah. Okay, in feelings when you say fantastic means it is much far better than very good, right? So it isn't fantastic, it is very good, something like that. This is a way of expressing or grading, giving grades to your feeling of appreciation, right? So if you have doubts, please ask me. Please don't be silent, okay? Now we will start from here. How do you say but in French?
Mais. Mais. Right? Très bon. Mais. Now, when you say, but it's always here. As an example, everything. See, pen. My pen is always here. Where it is? Mais c'est toujours ici. Toujours ici. Mais c'est toujours ici. Right? Mais c'est toujours ici. Now, एक बात सुनिए. Okay, if you don't practice 3-4 चीजों से होते हैं. आप अपने वोकल जो थ्रोट है आपका, उसको आप प्रैक्टिस नहीं देंगे, नहीं आएगी. एक्सेंट कैच नहीं करेंगे. साउंड जो है, सांस जो है पेट से निकल के, और इट शुड लाइक द एयर from the stomach, it should go all the way through the lungs and then to your vocal क्या बोलेंगे, esophagus से होते हुए then बाहर निकलना है. और उसमें दांत कितनी दूर की स्पेसिंग है, जबान की कहाँ पे होगी, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस होती है अगर आप जब बोलते हैं. तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो सिर्फ आपकी कानों की प्रैक्टिस हो रही, आपकी आंखों की प्रैक्टिस हो रही. खामोशी से सुनेंगे, जबान की प्रैक्टिस नहीं होगी. We are learning a language to speak, right? तो शर्माएंगे तो नहीं होने वाला है. और आपको मालूम नहीं है कि जब बोलता हूं मैं तो कि मेरे पेट से आवाज हवा निकल के बाहर आना है, तो उतनी जोर से जब बोलेंगे आप तो आपका एक्सप्रेशन निकलेगा. वरना तो ये हो जाएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं से toujours ici, ये नहीं, ये दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन. This is not an expression. Okay, how you should be? Like you should be like here. It's always absolutely fantastic here. Now how will I say with expression? C'est toujours absolument fantastique ici. C'est toujours absolument fantastique ici. ये जो expressions है, आप किसी भी फ्रेंच का एक छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए. फ्रेंच के लोग कैसे बात करते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ बात करते हैं. तो लैंग्वेज गिव्स सम यानी मेक द लिसनर, वो आपके उसमें रहेगा, इंटरेस्ट के साथ सुनेगा आपको, राइट. एंड मोर ओवर we are trying to express our feeling. In the previous example, I think in the previous class, we learned one example that says that 2 types of mood थे वहां पर. क्या थे? It is not fantastic, it's very good, right? So it is a way of grading. We just learned, right? In order to grade, you need to be expressive. Let's go with this. That is delicious, but it isn't very good for me. Ça c'est délicieux. Ça c'est délicieux. Speak. पढ़िए. Ça c'est délicieux. Mais ce n'est pas très bon pour moi. Ça c'est délicieux. Mais ce n'est pas très bon pour moi. Ça c'est délicieux. Mais ce n'est pas très bon pour moi. Ça c'est délicieux. Mais ce n'est pas très bon pour moi. Okay. Okay, now I will record it with a slow manner so that you can listen on YouTube and revise from there. Ça c'est, okay, ça c'est délicieux, mais ce n'est pas très bon pour moi. अब आप très बोलें कि très बोलें, très is much better, okay. Ça c'est délicieux, mais ce n'est pas très bon pour moi. Ça c'est délicieux, mais ce n'est pas très bon pour moi. Très bon pour moi. Record this. Oui, c'est toujours absolument extraordinaire ici. Yes, it's absolutely extraordinary here. How you say that in French? Speak. Come on. Oui. C'est toujours absolument extraordinaire ici. Extraordinaire ici. Très bon. Oui, c'est toujours absolument extraordinaire ici. Oui, c'est toujours absolument extraordinaire ici. Extraordinaire ici. First R is not going to have a KH sound. Second R is going to have a KH sound. Please remember that. When you practice, you will automatically remember. Okay? C'est toujours. See here. KH sound is here. Okay? Oui, c'est toujours absolument extra.
when I say extra, R sound is coming. But extraordinaire, extraordinaire, ici, oui, c'est toujours absolument extraordinaire ici. Speak. What we learned last time. Now let's revise. The spelling L-E, okay, is lo and la and le. Okay, the pronunciation. Lo, la and le. Now forget this pronunciation. Look at this. Just look at this. I am looking only at this. Okay, say lo, la and le. Don't see here. Lo, la, le. Lo, la, le. Okay, now E you have lo. Okay, la is la, le, S is le. Okay, le is S silent. Okay, le. Fine. But here main important thing is that lo. Revision नहीं हुआ है. Okay, revision नहीं हुआ है. Okay, जोखने. No, this way अगर एक महीने में ये इतनी हालत है तो आगे 2-3 महीने तक आप लोग नहीं जा पाएंगे. रिवीजन जरूरी है. प्लीज रिवीजन बहुत जरूरी है. जोखने. Okay, the KH sound is here, so don't look at this. Now say जोखने, 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 and this E is not silent because we have double E over here. Okay, and yeah, so it is not it and जोखने, and this N is not silent. It is completely N. जोखने, 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 right? जोखने. जोखने. And when you say day, it is जोखने, and when you say days in plural, it is jour. 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 Lower jaw should be protruding outside, then only you will get the correct sound of ja. Ja. Jour. Jour. Okay. Now days of the week, if you want to say in French, how you say? Jour de la semaine, jour de la semaine, jour de la semaine. Jour de la semaine. Okay, let's. Are you able to listen to this? De la semaine. Jour de la semaine. It is saying jour de la semaine. It is not using the sound of kh in this one. But what we have learned, jour de la semaine. Okay, now I wanted to actually give you the sound for this, not for this. Let's focus on this only. How? See here. Let's do one thing. Let me copy this, and now let me remove. Okay. Okay. Now let me do the same thing for you here in my mobile. Okay. Those who have 2 devices might have done by now. Okay. Before I show them or give them. Okay. Now. Okay, see here. Got it? Okay. So what sound are we able to get a catch of this? What could we catch from by listening? Do. So it is not the, it is do. But in this context, it is du la semaine. Okay. No, sir. Okay. Lundi, mardi, and No, sir. mercredi, jeudi, okay, vendredi, and samedi, dimanche, okay, and then what you have this one? Aujourd'hui, okay. Now from where this KH sound is coming, I don't know, but it's there. You can type today and see in the Google Translate. Okay, let's not do it for each and every word, that it will take a lot of time. I showed you one, but aujourd'hui. Okay, now for example, aujourd'hui, say vendredi, not today, but on that day of the class.
Today is what? Sunday for us, right? Aujourd'hui. Say one qadi. One qadi. Okay. Now, next. Now, thank you. What do you have here? Yesterday. What do you say? Air. How do you say that? Please revise. Up. Air. 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 Okay. Air. Air. Okay. Air. Air. And how do you, example is what? Air se jeudi. Air se jeudi. How do you say that? Air se jeudi. What does it mean? Yesterday, say Yesterday. Yesterday was. Yesterday was. Yesterday is jeudi. Say jeudi. Now, this is not the exact meaning for was, but this is there. Was you will learn later. Okay. Okay. Tomorrow. How do you say tomorrow in French? Come on, faster. Duma. 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 demain. Duma. 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 Again, guys, pronunciation is mentioned over here. You need to by heart by now. Duma. By heart, by practice, not verify. Magab mat kariye. Practice. Absorb करिए language के words को, absorb करिए sounds को, absorb करिए, acquire करिए language को. Language को memorize नहीं करना है कभी भी, acquire करना, याद रखिए. Acquire का meaning क्या है? Google कर लीजिए, पढ़ लीजिए डिटेल में. Memorize तो क्या है आपको शायद मालूम है. The day before yesterday. Avant-hier. 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 Again, the sound of O is here. Okay. Avant-hier. Avant-hier. C'était. Avant-hier. C'était samedi. Samedi. As an example, avant-hier. C'était samedi. C'était is what? Was. Okay. C'était is what? Was. Fine. Okay. Every day. Tous les jours. 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 Jours. Tous les jours. Okay. Tous les jours. Okay. Now when you try to find out the meaning for tu, it is all. Les is all. Jour is what? Days. When we say tous les jours. Every day. Yeah. When we say tous les jours, all days. All days it cannot be. In English it cannot be. But in French it is. Tous les jours. That is the reason two words have one translation. That's the reason we have two words for one translation. For example, all goes with two, and les goes with all also. But in order to use, say in French, all like every day, tous les jours. You say that, right? We have no, not missing. Sorry, I didn't get you. What did you say? Okay. Now, let's quickly go with this. Please mute your mic and save on your side. Okay. And if you want to revise it again and again, go to the YouTube video. This will be loaded tonight itself, and then revise it over there by pausing and by pressing just twice, tapping twice. It will take you 10 seconds behind or further, something like that. Do there. Okay. Mute your mics. So how will it be uploaded on YouTube? Yes, already loaded, Amar. Okay. ये आप लोगों के कुछ discussion नहीं आने के लिए. Okay, fine. So the sound of the alphabet is what? A. Okay. And example, like the word which comes with A, akbar. Akbar is what? Tree. Okay. Tree. Let's go. क्या हो गया? Okay. Now, the sound of B is what? B. How? Maybe same thing, same sound like B in English, and banan. The word with B, example is banana in English, but in French the pronunciation is banan, and the N is not silent. That's the reason it is given twice. Okay, banan.
like it is giving a humming or buzzing sound at the end of the word. Banan, nasal sound. Banan. Okay. Okay. Now let's go with the next alphabet. Say is what? C. The sound of C is what? Like C in English is C, and it is C same. But the rules of C we learned before, right? C plus E I, all those rules will be applied. So we have keqion, 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 keqion. How the meaning of keqion is pencil, keqion. But it is somewhere related to crayon. Crayon is in English, but the pronunciation is what? Keqion. Keqion. Okay. Okay. What is that? Dofa. 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 How do you say? Dofa. Dofa. N is half silent. And the sound for D is what? Same like the sound. The sound like dog. As in dog, we have the dog. Dog. The same sound of D as in a word dog. Okay. So it is what? Dauphin. Dauphin. Dauphin is what? Dolphin. Dolphin. Dauphin. They. An example. Next word is what? E. And how do you say in French? The sound of this alphabet is A. Like. Escargot. Yeah. Like in you have in verb. Verb. If you remove the B and RP, so that A sound is there, and the same sound, but the example for that goes with escargot. Escargot. Escargot is what? Snail. Okay, and next is what? F. F is same as F in English, and example of that a word with the F is what? Fear. 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 Fear is what? Girl. Okay. And you have garçon. Garçon. Boy. And the sound of this is little typical. G. Okay. Again, the lower jaw has to work by protruding out. Bahar nikaliye thoda sa. G. Okay. And revise this by watching the video. And you have ash. Ash. Ash is what? Same like ash in English. Okay. And H is silent. And ibu. Ibu is the word for owl in French. Ibu. Ibu. And the pronunciation, just follow the pronunciation, but don't try to look at it. Ibu. H is silent. Ibu. So be like this while practicing. Once you practice, inshallah, you will be in a position to just ignore this. Okay, ignore this and write and revise. And if you have written in your notes, hide this with something. Okay, hide this with something and then revise. Ibu, ibu, ibu. And you have I, igloo, same sound is same as E. Like that's how is the sound. Team. T nikaliye, remove the T. M, im, E, E, T, im, T, E. Sound, same E. But why I'm saying this so particularly? Because the E sound is for I. And for E, what it is for E? What it is for E? Thoda sa tricky hai, but you will get it, inshallah. Inshallah, tonight you'll get the chart. Next is what? You have ja. Again, same. Ja. And jupa. Jupa is what? A skirt in French. And the ja sound is same as the sound that comes out for measure. Ja, measure, ja. Now, example is K is Congo, 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 Ru. Now here the sound of GH, is more dominant as compared to KH in other places for R.
Like we have learned, right? So many places where we have R's, we have a sound for K of KH. But here we have GH sound. Congo. And you have L. L is what? Luen. 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 What? Moon. L is L. You can read this. And okay. M is what? M is same as M in English. Sheep is the translation for mouton. Mouton. The mutton word came from there. Okay, mouton. But the pronunciation originates as this way, mouton, but not mutton. Mouton. And then you have, okay, you have cloud. And nuage. 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 N. N is N. Nuage. And O is what? O is what? Oqayya. 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 This ear, okay. Oqayya. Oqayya. And O is O. So if P is pe, sound of same pe, pen, and poisson. Poisson. Poisson is what? Fish. And poisson, poisson is fish. And Q. Q is the, see, read it this one. Q. K-E-W, Q. Q. Same sound. And quatre. Quatre. For 4. Like we learned this in numbers in the future classes. We'll revise it inshallah today. Quatre. Next. R is what? Rivière. Rivière. Now here GH sound is more dominant in the starting, and KH sound is more dominant in the ending. Okay, in the ending. Rivière, rivière, and R is the toughest alphabet in French. As for English speaking, the persons who understand or speak English, R, okay, and S is same. And but singe is what? Monkey. And T is what? Okay, the sound is T, same. Top. It is not top. It is not top. It is top. Your tongue is same place, same as in English. Okay, top. But tokchu, tokchu, tokchu. Again, KH sound is dominant over here, not GH. Okay, U is what? EU. Okay, read this one. I gave it this for you. EU. Okay, U. We say U, but it is little bit EU. Okay. Usine. Usine is what? Factory. Usine. Now Z sound is coming out here. Same like measure we learned there in example. And you have car. This is very, very voiture, very common word. We're going to use it. Voiture, and way. The sound for that is way, and for W, W. Again, this has to be learned specifically. It's quite different from English. W. Okay, and water. The sound of W. Oh, are you? Okay, wagon. The stress is there on G, so that's the reason wagon. If I remove this, you should be able to say wagon, but this is for your help, but you should not give a pause there in between. Wagon. Okay, N is half silent. Wagon. Okay, and this one is what? Xylophone. What is that? Xylophone. G sound is like small, like k. Very, in the very what? T sound is like small T sound is there, not the k's, not the k, but it is k. In the same way, xylophone. Okay, xylophone. And G has to be very as short as much as you can. Xylophone. But it G, not xylophone. I am removing G over here now.
xylophone. No, it's not like that. It is xylophone, xylophone, xylophone. Okay. Now, yacht, yacht. Yacht is what? This again, one sec. The sound of X is eeks. Eeks, not X, it is eeks, okay? And you have the sound for Y is what? Igr, 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 g sound, okay? GH sound, igr. And yaut, yaut. How do you write that? How do you write that? The spelling is this, and yogurt, yogurt in English, and yaut. Ka sound is there. Yaut, 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 yaut. You'll get it. Yeah. But if you practice, pause my video, practice it so many times, go back, listen to it, pause it, practice it again and again. Yaut, yaut. And zebak. Zebak is zebra. Zebra, zebak. And Z is Z. Z, only say H is more obvious. Z, Z, Z. When I'm saying H sound over there. Z. And zebak, zebak. The wall. Okay, we will start from here. Okay, this is the 13th session. Okay, 13th session revision and fast revision. Okay, lumière, 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 lumière. बोलिए, pronounce करिए. Lumière, Lumière. lumière, lumière. Le toit, le toit. Le toit is what? Roof. Le toit, roof. And le sol. लो सॉल नीचे देख के बोलते जाइए ताकि आपको एक वो मिले. लो सॉल. बच्चों को हम जो सिखाते हैं तो हम बताते हैं बाकायदा, तो खुद को भी हम बता लेने से थोड़ा सा बचपना हो जा रहा है या फिर बच्चों जैसी हरकतें नहीं हो रही है. एक्चुअल लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ता है. इसको TPRS बोलते हैं. TPRS क्या चीज होती है उसके लिए गूगल कर लीजिए. एक टेक्निक है, टोटली फिजिकल रेस्पॉन्स समथिंग है. TPRS, यस, TPRS, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स सिस्टम, ऐसा कुछ है. ये टेक्निक से जो है बहुत ही अच्छे से कैच करते हैं. जब हम लोग कार्टून देखते हैं, कार्टून से कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने पिक्चर बैठ जाती है. तो हम पिक्चर दिखा रहे हैं एक्चुअली अपने दिमाग को. लोसॉल इज व्हाट? फ्लोर. एंड लोमिया, ओके, लोमिया, The wall. ओके. लोतुआ is roof, लोतुआ. And losol, okay, what's that? Porte is door. Le Porte is door. La porte, and fenêtre. Window की तरफ बता लीजिए. La Fenêtre, la fenêtre, fenêtre and la télévision, la télévision. N is half silent. Télévision, same like bon. Okay, and again we have a word here where you have R half present. Raqido. Now if I say raqido, then I should have used here RA, right? Then I should have used here RA, but no, R is half silent. So raqido, right? You will get it inshallah. Practice kariye. Raqido. Okay. Chair. मैं किस पे बैठा हुआ हूँ? Chaise. La chaise. यहाँ पे chaise है, वहाँ एक chaise. अपने रूम में जितने chair है बता लीजिए. La chaise. ओके, अब ये क्या है जिसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है? लताब्ल. ओके. TPRS क्या है? बहुत ही अच्छी मेथोडोलॉजी है बताते हुए सीखने की. ओके, TPRS. सो लताब्ल. ओके, ओके. फैन को क्या बोलेंगे? लुफान. ओके. और एक वर्ड है जो कॉमनली यूज नहीं होता लेकिन बोला जाता है. वेंटिलात. फैन को ही हमारे पास जो वेंटिलेटर है ना, वेंटिलेटर हम लोग खाली होल को वेंटिलेटर बोलते हैं और वेंटिलेटर पर फैन लगवा देते हैं. ठीक है, हम लोग, वो हमारे लिए वेंटिलेटर है. लेकिन इनके पास हवा देने वाली चीज को लोग वेंटिलेटर बोलते हैं.
हम लोग वेंटिलेटर सुराख को बोलते हैं, होल को बोलते हैं, वहां पर जो किचन में होता है मोस्टली, वॉशरूम्स में होता है। ये लोग हवा देने वाली चीज को वेंटिलेटर, ओके, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर, ओके। लाइट, ला लुमियर, ला लुमियर, ला लुमियर। जितने भी बेड लाइट है सब छोटे छोटे लाइटों को बताइए, ला लुमियर, ला लुमियर, ला लुमियर, TPRS, ला लुमियर। एंड व्हाट please is what? S'il vous plaît, s'il vous plaît. And what is this sign on I? What is the sign on I? Chapeau, 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 chapeau. उसको हम वो क्या बोलते हैं हम, सा में देखे थे ना, सा का सेडिला देखे थे ना, नीचे सी के नीचे हुक है, वो सेडिला है। ये जो है ना शैपो है, वो सेडिला है जो सी के नीचे हुक आता है। और एक्सॉन ग्राफ वो तो हम पढ़ लिए पहले। एंड नाउ ओके, एक सेकंड, यहाँ पे एक छूट गया। ओके, नाउ प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स। ओके, नाउ अभी कोई सवाल कर रहे थे, स्विच को क्या बोलते हैं? स्विच को क्या बोलते हैं मुझे अभी नहीं पढ़ाना है, ओके, वो छोड़ दी। हम बात करेंगे स्विच ऑफ। हम एक्शन की बात कर रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं। स्विच ऑफ, स्विच जो खटका है, खटके को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, हम बाद में पढ़ेंगे। हम ये एक्शन की बात कर रहे हैं, ओके, इट इज अ वर्ब। स्विच ऑफ करिए, ओके, एक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वही तानग ललुमेर, वही तानग ललुमेर। अब ये प्लीज का ये फॉर्म क्या बना, सिल्वू प्ले था पहले, हाउ वाई इट इज नाउ वही, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अब एज इट इज आप याद कर लीजिए। हमको एक थोड़ा सा हमको एक बोलने आना है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम नेचुरल मेथडोलॉजी से हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं बोलते कि जो है बेटा दिस, इफ, ऑफ, एट, द, इज, इन, ये प्रीपोजिशंस हैं। हम ग्रामर नहीं सिखाते, हम बच्चों को जुमला सिखा देते हैं, उसके बाद में ग्रामर सिखाते हैं। लैंग्वेज आ जाने के बाद में ग्रामर सीखते हैं। इवन इनफैक्ट रीडिंग एंड राइटिंग पूरी लैंग्वेज आने के बाद सीखते हैं, चाहे वो हम अपनी मदर टंग भी क्यों उर्दू ना सिखा रहे हैं, ओके। तो सेम वे आप जुमला सीख जाइए। एक जो s'il vous plaît, fermez la porte, fermez la porte, s'il vous plaît, fermez la porte, la porte, okay. And like now we want to say please open the window. We learned close, okay. Now we learn open the window. How you'll say s'il vous plaît, ouvrez, ouvrez, open, action के साथ, TPRS, okay. S'il vous plaît, ouvrez la fenêtre, ouvrez la fenêtre, okay. And we will say please close the window. How you say? S'il te plaît. Again, यहाँ एक mistake है. Let me correct. Here we have learned that s'il vous plaît, and here we are saying s'il te plaît. This is informal. To is informal. Vous is formal. Vous is plural. Singular formal. मतलब अदब के साथ बोलने का तरीका है। आप तुम जैसा है ना फर्क, वो फर्क है इसके अंदर। आप का लफ्ज यूज करना चाह रहे हैं, आप ये कीजिए ना बोलना चाह रहे हैं। इफ यू वांट टू यूज इट फॉर्मली, सो वो बोलेंगे आप। और अगर आप तुम ये कर दो ना बोले तो ये टू यूज करेंगे आप यहाँ पर, s'il te plaît. तो s'il vous plaît is formal and s'il te plaît is informal. So now let's go with this. S'il te plaît, fermez la fenêtre. S'il te plaît, fermez la fenêtre. S'il te plaît, fermez la fenêtre. Okay. Veuillez tirer le rideau de côté. What is that? Please pull the curtain aside. Like, please pull the curtain aside. How do you say? Veuillez tirer le rideau de côté. Veuillez is please. Okay, this tirer is pull. Le rideau is this one from here to here. Rideau de côté. Côté is what? Now from where this R sound is coming, we don't know, but côté, R sound is there, not silent. Côté, okay. Chapeau is there on O.
Okay, if you write these things, because we are going to have a writing test also, please start writing it and saying it, okay, so that you will have the spellings also done, because exam is going to have all the 4 sections. Okay, veye fiqh mein laqido. Veye fiqh mein laqido. Laqido. Okay, you remember that laqido, okay, the R was there. Okay, R was there. Veye fiqh mein laqido. Close the, please. Okay, what is for me? Pour moi. Pour moi. Okay, now, and what is sorry, one sec. For him. Pour lui is what? For him. Pour lui, for him. And it is good for him. It is good for him. C'est bon pour lui. C'est bon pour lui. Très bon. C'est bon pour lui. And it is not good for him. Like, for example, somebody is diabetic. Ce n'est pas bon pour lui. 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 Flow में बोलिए. Practice कीजिए. Flow में बोलिए. Ce n'est pas bon pour lui. Okay. 10-20 times. वीडियो पॉज करिए. 10-20 times बोलते जाइए. ये 1 घंटे का सेशन है. इसको 2 घंटे में प्रैक्टिस करिए. Okay. It isn't for him. It isn't for him. It's for me. When I say ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. कोई चीज आई है, आप जो बोल रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन आके उनको दे रहा है, आप उनको बोल रहे हैं कि ce n'est pas pour lui, not for him, it's for me, c'est pour moi. Okay, for her, pour elle, pour elle. And now here, pour elle is there, R is half silent, pour elle is there, and pour elle is also there. Most of the places you will learn that. Okay, like I'm saying here, pour elle. Now when I'm saying pour lui, R sound was there, pour lui, but here her sound is going to come somewhere. You'll learn that. But for her, pour elle, I'm going to use pour elle. Okay, I'm used to it now. I don't have to be subconsciously present and then nahin. Practice में निकलता है, inshallah. And what is that? And no. No is what? No. And half silent. No. Half silent. No. And if you want to say what? No, it isn't very good. No, ce n'est pas très bon. No, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. And mauvais is what? Bad. It is bad for him. For example, if you want to say, it is always bad here. It is always very bad here. Okay, we have a new example. Now, how you will say? Say toujours. Say toujours. C'est toujours très mauvais ici. C'est toujours très mauvais ici. Okay, next. Next is what? Okay. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas parfait. It isn't bad, it isn't perfect. ठीक है, 50-50 somewhat. Okay. And now the new word is what? Le restaurant. Le restaurant. In this, GH sound is dominant. Okay. Le restaurant. Le restaurant. Did you catch this sound? Okay. Le restaurant. Le restaurant. क्या बोलेंगे यहाँ पर आप? नेपा. Isn't here. तो अब यहाँ पर हम एक नई चीज सीखेंगे. Snepa हम सीखे थे. Okay. We learned what? Snepa. It isn't. And if we want to remove this, say Nepa. Okay. How you will say Nepa? Now we have to go back to this example. Le restaurant n'est pas ici. Le restaurant n'est pas ici. Le restaurant n'est pas ici. Now, अभी तक हम यूज कर रहे थे स्नेपा. अब हम स्नेपा यूज नहीं करेंगे. स्नेपा यूज नहीं करेंगे. 1 मिनट दीजिएगा, ऐसी कम करके आपको. जी. Okay. Le restaurant n'est pas ici. Okay. Now what? Le restaurant n'est pas ici. Okay. Next is what? The restaurant isn't perfect, but it's very good.
Ok. Le restaurant Le restaurant n'est pas parfait, mais c'est très bon. Ok. Le restaurant n'est pas parfait, mais c'est très bon. Boliez. Le restaurant n'est pas parfait, mais c'est très bon. Le restaurant n'est pas parfait, mais c'est très bon. Oui. How do you say? What do you say about? I mean, what word we use for house? Maison. Maison. Maison is what? Maison is a feminine word, basically. Okay, remember that. Maison. What is this? Say. It is what? Say. Now, if we want to say only is, and we don't want to say it is, but we want to use only is, how you use a? The house is good. House is good. Tell me. La maison est bonne. Est bonne. Now, why bonne? Maison is what? Feminine. So, is feeling. Good is what? A feeling. It is changing the gender of the bon from bon. Normally, we have been using in general bon, which was masculine. But when we have a feminine noun in the sentence, we will change it to change the gender, and then it will become born. We have learned this born. I think in next slide or coming slide we have. Yeah, we have the next slides. Okay. When we say have a nice meal, it is in French is what? Bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit. But actual meaning of, if you translate in English, it is good appetite. But we don't wish in that way, right? We say, but bon appétit. We cannot literally translate it. सीधा सीधा translate करना गलत मीनिंग निकल जाता है हमारे पास. Good appetite. Appetite का मीनिंग क्या है? Good digestion. Have the genders, okay? French adjectives जो है ना, gender और number की वजह से modify हो जाते हैं. Okay? What happens? Bon becomes bon. And bon is masculine, and bon is feminine. And when we have masculine plural, it bons, and it is feminine plural, it was bons. And let's say bon appétit. Bon appétit is what? Bon appétit is masculine. Appétit is masculine. That's the reason we use here bon, not bon. Okay. Let's move forward. Okay, for day is what? Jour, and bon is what? Good, and day is what? Jour is what? Day. So good day. You're actually trying to say good day. Have a good day, but have a good day. They don't say in French. They simply say bonjour, bonjour, bonjour. Kha sound is here. Okay, so that jour is not changing the bon, because jour is masculine. If this was feminine, it is bonjour, bonjour, like here. See here. Journée is what? Journée is what? Feminine. And bonjourné, on the other hand, expresses the wish that you have a good day. Bonjourné. Journée word is feminine, and that's the reason you are forced to change it. And bon become like bonjour becomes bonjourné. कोई भी काम कर रहे हैं तो what do you say? Bon continuation, 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 bon continuation, bon continuation, bon continuation, bon continuation. बोले आप. Okay, and what example? Another example is that if somebody got up too early in the morning, and the news readers early in the morning, they don't say good morning, but they say bon réveil, bon réveil. One sec. Okay, now bon réveil. GH sound is for this, and réveil. Okay, bon réveil.
Why bon réveil? And the restaurant is here. How you'll say? Le restaurant est ici. Le restaurant est ici. Okay, if you want to say by name, how you say? Some John is here, Arqam is here. How you say? Arqam est ici. Arqam est ici. And Paula est ici. Okay, from the 15th session, we are revising now. Okay, it is what? To is what? Everything. To, everything. Right? To everything. Everything. I think everything is perfect. Pour moi, tout est parfait. Pour moi, tout est parfait. How do you say? Pour moi, I think everything is tout. Is what? Est parfait. Pour moi, tout est parfait. Pour moi, tout est parfait. 3-4 बार बोलिए. Pour moi, tout est. Okay. Now is what you have a word, a sentence word. That is for her. That is for her. Ça c'est pour elle. Ça c'est pour elle. Okay. Just now we learned that is what? A. Is what? A. But now you are saying that is for her. Say only because of the regard, a special consideration for that. Okay, remember that. Okay, ça c'est parfait. Ça est parfait. No, ça est pour elle भी बोल सकते हैं आप. Ça est pour elle बोल सकते हैं, but not appropriate, especially for that. Not a rule, but not appropriate. Okay, ça c'est pour elle. Right? Did you get it? Ça c'est pour elle. Okay, from the 16th session we'll start from here. Where को कैसे बोलेंगे? Okay, like उर्दू जिसको आती है, अरबी जिसको आती है, आइन पेश ऊ. Okay, ऊ and ऊ का. Okay, one minute. This यहाँ पर ये कौन सा accent है उसके ऊपर? Left tilted accent grave. Accent grave. Left tilted accent grave है. Right side वाला क्या है? Accent acute accent. Right tilted is acute accent and left tilted is what? Accent grave. Accent grave के साथ जब आएगा ऊ तो ये हो जाएगा मीनिंग एक्चुअली वेयर का. कहाँ? वेयर. कहाँ? वेयर. याद रख लीजिए. कहाँ बोल लीजिए ना. TPR. Okay. Now without a accent grave is what? It is or. उसके बदले or. Okay, and you have the is from, and the के कई forms है. We are going to learn one after the other, but for this chapter we are going to only consider this from. Of में भी दा आएगा, to के लिए दा आएगा, by, with and then में भी आएगा, and ये on जो है ना, en को on बोलेंगे, on, and n silent, half silent है, nasal sound है, like bon, on is in में आएगा, into, to, off and at में आएगा. हम धीरे धीरे सीखेंगे. हम फिलहाल यहाँ पे जो है हम सिर्फ इन में सीख रहे हैं, इन का देख रहे हैं. पहला कंटेक्स्ट में ये सिर्फ ये ले रहे हैं. और ये हो गया क्या है? और ये हम फॉर सीख चुके. हम दूसरी चीज़ें सीखेंगे अब इसके अंदर. ओके, सिल्वो प्ले हम जो है ना सीखे थे. सिल्वो प्ले वो क्या है? प्लीज में है. एंड प्लीज के दो फॉर्म्स हैं. दो फॉर्म है. इनफॉर्मल सिंगुलर इज सिल्ता प्ले एंड सिल्वो प्ले इज फॉर्मल भी है, वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. समझे आप? प्लीज मैं आपको बोलूंगा तो एक को भी बोल सकता हूँ प्लीज नहीं, सॉरी प्लीज नहीं, सिल्वो प्ले बोलूंगा एक को बोल सकता हूँ. मिक्स जेंडर के लोग खड़े हुए प्लीज बोलूंगा तो सबसे भी हो जाए, सबको कवर अप हो जाएगा, प्लूरल में कवर अप हो जाएगा. लेकिन बट रेस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ फॉर्मल है वो. अपने एकदम से बिल्कुल इनफॉर्मल के लिए जो है ना वो ये बनेगा सिल्ता प्ले. ओके, नाउ where is the telephone? Please, where is the telephone? If I want to say, how you will say? Silta play, o with accent grave. Where आएगा? Right? Silta play.
Okay. So silta play OA lo telephone. Okay. Il A. अब it is हम नहीं सॉरी it is हम सीख चुके थे तो हम अब क्या करेंगे is it लेंगे. is it के लिए क्या है एथिल. is का क्या है पहले हम सीख चुके a है. e का क्या है a है और it के लिए क्या है यहां पर जो है it is हम सीखे थे तो वो से था वो. राइट. डिड यू गेट इट. it is के लिए क्या था. it is के लिए ये था. राइट. ये था से था. बट हम लोग क्या करेंगे आप is it जब बोलेंगे तो एथिल आ जाएगा. प्रैक्टिस कीजिए. एथिल is it एथिल is it एथिल एक्शन के साथ प्रैक्टिस. आपकी याद जहन में बैठना है तो एक्शन के साथ करिए. Is it ethyl? Ethyl. Let me record this. What is a new word for the 16th session and the pronunciation for this? All of these are the forms of what, but we'll go with the kua. Kua is for this session and we'll go with this what hour. Now if I want to say okay, right. H is silent. Now what time is it please? What time is it? Quelle heure est-il s'il vous plaît? Quelle heure est-il s'il vous plaît? Now we see here when we said just now we learned, right? Is it so est-il. Quelle heure est-il s'il vous plaît? Quelle heure est-il s'il vous plaît? Now numbers, we started numbers after that. Do we need numbers? Les nombres 0 is what? 0 1 is what? And yun is feminine, masculine. Yun. Okay. Dew is 2. Dew. Toi. Quatre. त पहले है ख बाद में है. वो क्वार्टर पे नहीं जाना. क्वार्टर में ख पहले है टी बाद में है. थोड़ा सा ये समझ में आ गया ना. ओके. साइंक तो इजी है. मोस्ट ऑफ द सबको आ गया. साइंक. सीज नॉट सीज. आंख से देख रहे हैं. सीज भी नहीं है वो. सीज भी नहीं है but somewhat between है. sees. Okay, now I will do a change over here. Okay, note कर लीजिए कि this is sees and said कैसा बोलेंगे. set है ना. देखिए वो सेट हो गए कि नहीं हो गए. सामान सेट हो गया कि नहीं हो गया. वो सेट है. वो टा है. वो ये ट है. set right. टंग ऊपर नहीं जाएगी सामने आएगी टंग. set सात है नहीं. सात कैसा बोलते हैं अरबी में सॉरी उर्दू में. सात उसी तरह set है. वो सात set रिलेटेड है. उर्दू अरबी से ही तकरीबन मिलती है फ्रेंच कई चीजों में. ओके. उइट 8 8 is उइट and nef is masculine. अच्छा हम masculine feminine कहां तक देखे. 0 to 10 में. 1 में देखे थे. 9 में देखे. राइट. रिमेम्बर छोटी चीज है. Yes, sir. ओके. nef. ओके. एंड दी is these. बात जगह यहाँ पर वो z का साउंड भी आएगा. एक मिनट मैं यहाँ लिख दूं जरा. दी भी आएगा. दिस भी आएगा. समझ तो एक मिनट कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों के लिए. ओके. हम दी भी बोलेंगे उसको या दिस बोलेंगे. राइट. दी या दिस वो डिपेंड करता है. कई जगहों पे वैसा है. ओके. डन विद द 16th session. We'll start the 17th from 17th session from the number 11. 11 नंबर क्या है. 11 क्या है in French? 11.
Ons. 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 Not ons. थोड़ा सा elongate करिए. Ons. 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 या ओ डालूं मैं यहाँ पर क्या करूँ? Ons. ऐसा डालूं या फिर ons बोलेंगे आप लोग? Ons कौन सा सही है? ये सही है? Okay. 12 is what? Those. 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 Okay. Qais. 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 त छोटा साउंड है. त qais. 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 बोलिए. Qais. 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 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Okay. Okay. Cans, 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 not cans, not cans. CAN लिखता था मैं वहाँ पर. Cans, 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 cans. Okay, says, 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 says. Okay, these set. Now from 16 के बाद से these set, these set, 10 and 7. These set, 10 and 7. These set, these with 10 and 8. 10 and 8, these with, 10 and 9, these nerve, 10 and 9, these nerve, वहाँ, 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 उर्दू में, वहाँ, वहाँ, वहाँ बोलते हैं ना, वहाँ की जगह वहाँ बोलते हैं दक्कनी में, वहाँ, ओके, now, वांतेया, वानेया, वांतेया, मैं वांतेया बोलने का आदी हो गया, आपकी मर्जी है, वानेया, वांतेया, ओके, now 20 and 1 है ये 20 और 1 20 wandu 20 and 2 22 wandu 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 wantua 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 ओके want कुआ भी बोल रहे हैं थोड़े लोग want कुआ भी बोल रहे हैं want तुआ भी बोल रहे हैं हम want कुआ के साथ जाएंगे want कुआ want कुआ want कुआ want कुआ ओके आपको याद है ये थ्री क्या था? थ्री जब बात करें तो क्या था? तुआ था, खुआ नहीं था वहां पर, तो वो चेंज हो जाता है. हाँ want खुआ want खुआ want खुआ want खुआ want खुआ want खुआ थोड़ा सा ऐसा क्रॉस चेक कर लीजिए जाके नोट्स में. ओके want खुआ एंड देन want cat want cat want cat 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 want cat. ओके अच्छा 4 क्या था? यहाँ पे टी पहले आ गया, KH बाद में आ गया, कैथ हो गया. 4 क्या था? 4 क्या था? टी पहले है, KH बाद में है, के बाद में है. ओके और यहाँ पर क्या है? अब कहाँ थे हम? यहाँ पर राइट. ओके राइट. नाउ वॉन्ग टी पहले है, KH बाद में है. क्वार्टर में फर्क आएगा. ओके वॉन्ग कैट Sank, one sank, one sank, one sank, one sees, one sees, one said, one said, one said, one with, one with, one with, one with, one tweet भी बोलेंगे, one tweet भी बोलते हैं, one with भी बोलते हैं. ओके one tweet, one with भी चलेगा, दोनों भी करेक्ट है. ओके one nef, one nef, one nef, one nef, one nerf. Want nerve भी है, want nerve भी है, want nerve, want nerve, want nerve, want nerve, and बनेगा उसके बाद थ्रोंतेया, थ्रोंतेया, थ्रोंतेया. Oh no, थ्रोंत है, थ्रोंत है, थ्रोंत है. 30 is थ्रोंत and थ्रोंतेया is 31. थ्रोंतेया is 31 and थ्रोंदू 32. थ्रोंतुआ यहाँ पे थ्रोंतुआ नहीं है, देखिए आप. ओके लाइक 23 में था. ओके वांतुआ था वहां पर, यहाँ पे वांतुआ है. वांतुआ बोलते जाइए. वांतुआ. ओके वांट कैट. सॉरी मैं कहाँ पर? थ्रोंदू. ओके थ्रोंदू. Trente-trois, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38,
38, 39, 39, 39. आप लोग म्यूट करके बोलते जाइए. 39, 39, 39, 40, 40, 40. 30 था 30, 40, 40, 30, 40, 40, 40, 41, 41, 41. और ये 41 हर एक में नहीं आएगा. थोड़ा सा कॉशियस रह जाइए. आप जितना डेली 5 मिनट में 100 तक पढ़ लेंगे, 5 मिनट में 100 तक पढ़ लेंगे. आप पढ़ लीजिए डेली. ओके, एक ज्यादा नहीं, एक 8 दिन कंटिन्यूसली कर लीजिए, आ जाएगा परमानेंटली. ओके, नाउ 41, 41. ओके, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 50, 50, 50, 30, 40, 50, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 30, 40, 50, 50, 50. Okay, done. Okay, now 51, 51, 51, 51. Okay, quickly. 51, 51, 51, 51, 52, 52, 52, 52, 53, 53, not quoi, 53, 53, 53. Hoa was only in 20s. Okay, 53. We'll check, cross check again. In you have 23, you have one qua. H sound is there, not tua. H. Okay, now in 33 you have tua. Okay, 33. And in 43 you have 43, 43, and 43, and in 43 and yeah, in 53 we have 53 we have. सो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं इतनी देर में. आप लोग देख लेंगे यूट्यूब पे कि क्या वो सिर्फ 23 पे हुआ है, वहां हुआ है, बट उसके बाद 33, 43, 53, and we have 50, 54, 54, 54, 55, 55, 55, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 59, 59, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 64, 64, 60. करेक्शन कर लीजिए. ओके, टी मिस हो गया था मेरे से, सॉरी. 64, 64, 64. याद है कि अभी देखे तो होश में याद आया. 64, 64, 64, 65, 65, 65. Like, okay, everybody make a T, put a T over there. 65, 65, 66, 66,
67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 70, 70, 70, 71, 71, 71, 60 and 11, 60 and 11 यहाँ से चेंज होने वाला है 60 and 11 क्योंकि 60 के बाद इनके पास 70, 80, 90 नहीं है 71, 72, 72, 12, 60 plus 12, okay, 73, 73, ये 60 plus 13, 73, 73, 74, 74, 14, 60 plus 14, 74, 74, रिवीजन कर लीजिए डेली 8 दिन कंटिन्यू करिए 5 मिनट लगेगा 1000 तक हो जाएगा इंशाल्लाह 74, 74, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 76, 76, 67, 67, 68, 68, 60. Okay, one sec. So لا حول ولا قوة थोड़ी सी गलती हो गई ओके तो 77 77 तो 77 77 78 78 78 79 79 4 coins 4 coins 4 20s 4 coins 4 20s 4 coins 4 coins 1 4 coins 1 4 coins 1 4 coins 2 4 coins 2 4 coins 2 4 coins 3 4 coins 3 4 coins 3 4 coins 3 4 coins 4 4 coins 4 4 coins 4 4 coins 4 4 coins 5 4 coins 5 4 coins 5 4 coins 6 4 coins 6 4 coins 6 4 coins 7 4 coins 7 4 coins 7 4 coins 8 4 coins 8 4 coins 8 4 coins 9 4 coins 9 4 coins 9 4 coins 10 4 coins 10 4 coins 11 अभी क्या बोल रहे हैं 4 of 20s then 11 बोल रहे हैं ओके 4 of 20 क्या होता है 80 होता है प्लस 11 ओके 4 coins 11 4 coins 11 4 coins 12 4 coins 13 4 coins 13 4 coins 13 4 coins 14 4 coins 14 4 coins 14 4 coins 15 4 coins 15 4 coins 15 ok 4 coins 16 4 coins 16 4 coins 18 17 4 coins 17 4 coins 17 4 20 10 and 7 97 total ok 4 coins 17 4 coins 18 4 coins 18 4 coins 18 4 coins 19 4 coins 19 4 coins 19 100 100 100 101 नहीं 100 100 मतलब 100 NT हाफ साइलेंट 100 100 ओके यहाँ पर अब बोलेंगे 100 100 100 100 100 100 100 102 102 102 102 103 103 103 103 104 104 103 103 103 104 104 104 105 105 105 106 106 106 106 106 107 107 107 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 110 अब यहाँ पर हम 100 अब उसके बाद क्या पूरा आप
गेस कर लीजिए, कंटिन्यू सेम रहेगा, इसलिए वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट इन द स्लाइड्स। ओके, ड्यूसॉन, ड्यूसॉन 200। और जब भी हम डबल जीरो की बात करेंगे, एस एक एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए आप, किसी और नंबर में डबल नहीं आएगा। आगे भी 201, 202 में जब आएगा, देखिए आप, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, डबल एस नहीं आएगा, सिर्फ डबल जीरो की जगह पे एस एक एक्स्ट्रा आएगा। सॉरी, डबल एस नहीं, एक एक्स्ट्रा एस आएगा। ओके, सो ड्यूसॉन्स, ड्यूसॉन्स, ड्यूसॉन्ट आ, ड्यूसॉन्ट आ, नॉट सॉन्टे आ नहीं, सॉन्ता, ड्यूसॉन्ट आ, ड्यूसॉन्ट आ। ये प्रैक्टिस करने से याद रहेगा कि कहाँ सौंते आ है, कहाँ नहीं है, वो ते बीच का नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस। ड्यूसॉन ड्यू, ड्यूसॉन ड्यू, ड्यूसॉन toi, ड्यूसॉन toi, ड्यूसॉन toi, ड्यूसॉन 4, ड्यूसॉन 4, ड्यूसॉन 4, ड्यूसॉन 5, ड्यूसॉन 5, ड्यूसॉन 5, ड्यूसॉन 6, ड्यूसॉन 6, ड्यूसॉन 6, ड्यूसॉन 7, ड्यूसॉन 7, ड्यूसॉन 7, ड्यूसॉन 8, ड्यूसॉन 8, ड्यूसॉन 8, ड्यूसॉन 8, ड्यूसॉन 9, ड्यूसॉन 9, ड्यूसॉन 9, ड्यूसॉन 10, ड्यूसॉन 10, ड्यूसॉन 10, toisons, 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 toisons 1, toisons 1, toisons 1, toisons 2, toisons 2, toisons 2, toisons 2, toisons 2, toisons 3, toisons 3, toisons 3, toisons 3. Okay, 400. 400, 400, 4, क्योंकि वो toisons सेम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। वहाँ ऊपर जाके 201, 202 कैसा था, वो 201 देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। 400, 400, 400, 500, 500, 500, नंबर सेम रहेंगे आगे के। 500, 500, 600, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 800, 900, 900, 900, 1000, 1000, ओके, 1000, 1000। ये खाने की जो होटल रहती है, मील्स बोलते हैं ना, तो उसी तरह मील है ये, मील, मील सेम स्पेलिंग है। डन विथ 18th सेशन। नाउ 19th सेशन, मूविंग फॉरवर्ड, नॉट रिवाइजिंग, दैट वाज देयर इन 18th सेशन। 19th सेशन का न्यू स्लाइड, इज इट, इज इट क्या था, एथिल। ओके, पार्टिसिपेट, एथिल, एथिल, पार्टिसिपेट करिए आप लोग। ओके, व्हाट क्या था, व्हाट क्या था, हम कुआ पढ़े थे वहां पर, हम आज केल पढ़ेंगे। दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, केल, केल। ओके, केल के कैसा प्रोनाउंसिएशन रहेगा, स्पेलिंग ये रहेंगे, स्पेलिंग ये रहेंगे, केल, केल। ओके, QELL, ओके, केल। एंड व्हाट टाइम इज इट प्लीज, हम क्या पढ़े थे जब, व्हाट टाइम इज इट, quelle heure est-il s'il vous plaît, quelle heure est-il s'il vous plaît। अब यहाँ पर क्लॉक है, ये क्लॉक को देख के बताइए, ये क्लॉक मैंने डाला है आपको देख के बताने के लिए कि il est une heure, il est une heure, 1 बज रहा है। कैसे बोलेंगे, अब यून क्या है, वो नॉर्मली जो है वो क्या बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलेंगे, यून क्यों बोलेंगे, आवर जो है फेमिनाइन है। il est une heure, il est une heure, il est une heure, il est un heure नहीं बोलेंगे, il est जी, इसीलिए हम नंबर्स में एंड यून पढ़े थे, यून पढ़े थे, यून, यून वो जो पढ़े थे वो यून खाली अलग से बोलेंगे, तो यहाँ पर यून आएगा, यून सेंटेंस के बीच में बोलेंगे, il est une heure, il est une heure, il est une heure, ऐसे भी बोलेंगे, वैसे il est une heure, il est une heure। और उसके बाद आएगा, ओके, नाउ मॉर्निंग और इवनिंग एंड आफ्टरनून, यहाँ पे कैसे बोलते हैं, AM PM को क्या बोलते हैं यहाँ पर, du matin morning, du après-midi, du l'après-midi, du l'après-midi, midi, du l'après-midi, du l'après-midi, and du soir, du soir, शाम को बोलेंगे, du soir, and यहाँ पे हाँ, il est tôt, it's too early, इतनी सुबह, it's too early, या फिर शाम में 7 बजे की मीटिंग थी, कोई 6 बजे पहुंच गया या 5 बजे पहुंच गया,
क्या बोलेंगे, इले तो, सॉरी इले तो और इले ताद। इतनी लेट आ गए, इट्स लेट, इतनी लेट आ गई, या फिर इतनी लेट हो गया, हम अब इतनी रात तक पढ़ रहे हैं। इले ताख, इले ताख, इले ताख। और यहाँ पर 2 PM का एग्जाम्पल है। देन व्हाट वी शुड से, इले दूज, या ड्यू नहीं बोलेंगे, इले दूज आख, ड्यूला आपके मिदी। आफ्टरनून, PM को आफ्टरनून, PM को क्या बोलेंगे, आफ्टरनून को आपके मिदी, ड्यूला आपके मिदी, इले दूजाक, ड्यूला आपके मिदी। और 3 PM को क्या बोलेंगे, 3 PM को ये बोलेंगे कि हम इले तुआ नहीं बोलेंगे, तुआज, दूज तुआज। ये जरा 2 एक एक्सेप्शंस है, मतलब खास बातें हैं याद रखने की। प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। इले तुआजा, घड़ी को देख के बोलिए 3 बजे, यानी तो स्लाइड को देख के, नोट्स को देख के बोलिए तुआजा, इले तुआजा दूल्हा आपने में दी। ओके, अब ये 6:45 AM क्या बोलेंगे, इले सीज आख quarante, इले सीज आख 45 du matin, morning, du matin, morning, AM मतलब morning, like du matin, il est 6h40, 45, 45. Okay, now 3 AM, il est 3h du matin, il est 3h du matin. तो आज क्यों बोलेंगे, क्योंकि दूज बोल रहे हैं। ये 2 चीजों के लिए, सेकंड एंड थर्ड के लिए खास याद रखना है। और यून तो फेमिनाइन है। ओके, तो आज ना 6:45, पता नहीं AM है कि PM है, बट विल से इले सेताख मुलाकात। अब यहाँ पर आया खा पहले, टी बाद में। 4 में क्या था, कैथ, टी पहले खा बाद में। अब क्या आएगा, खा पहले टी बाद में, कैथ। क्योंकि ऊपर देख लीजिए, नीचे मत देखिए, ऊपर देख लीजिए, टी बाद में है, कैथ। ठीक ना, इले सेट अफ मोला कैथ। मोआ मतलब माइनस, ओके, 6:45 मोला कैथ। ओके, अगला 11:15 को क्या बोलेंगे, इले 11h15, इले 11h15। मतलब ये तो पास्ट का है, पास्ट मतलब 11:15, मुआ नहीं आएगा, माइनस को पौने के लिए आएगा। ओके, 45 के लिए आएगा, 15 मिनट कम 3 बोलने के लिए क्या बोलेंगे, वैसा। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3:20, 3:20। सो आप कैसे बोलेंगे 3:20। ओके, इले त्वाज इले 5:30 को क्या बोलेंगे, इले साइंक एदमी, इले साइंक एदमी। से कांज क्यों 15 आवर्स बोल रहे हैं हम यहाँ पर, इले से कांज। इट इज भी बोल रहे थे हम, इल ए बोल रहे थे हम यहाँ पर ये भी बोलेंगे, हम इले कांज, सॉरी से भी बोलेंगे। पहले क्या बोले थे, यहाँ देखिए ना एक एग्जाम्पल। हाँ, इले बोल रहे थे, इट इज बोल रहे थे। अब इट इज के बजाय हम यहाँ पे बोलेंगे से कांज। ऐसा भी एग्जाम्पल है, से कांज। और एक 21:30 मतलब 9:30, मिलिट्री टाइमिंग है ये 21:30। देन क्या हम बोलेंगे यहाँ पर, वैनते यून थ्रॉन्ट, वैनते यून थ्रॉन्ट, वैन ए एट्यून। ओके, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए जोड़ के बोलना है, वन एट्यून थ्रॉन्ट। प्रैक्टिस कीजिए, वन एट्यून थ्रॉन्ट। ओके, नाउ ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 आर। ओके, से 15 पढ़े थे हम, और ये 20th सेशन है। हम वहां से रिवाइज करेंगे जो हम 20th सेशन के लिए नया था। मेरे ख्याल से ये भी हो गया था। ओके, वैन, इसको पढ़ लीजिए दोबारा से, वैन एट्यून थ्रॉन्ट। और एक बार यहाँ देखने के बाद में आप इमेजिनेशन में जाइए, यहाँ पर देखिए, वैन एट्यून थ्रॉन्ट।
तो दिमाग में भी थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। वैन एत्यून अप फ्रॉम, क्योंकि टीपीआर जरूरी है। ओके ना, इले मिदी, मिड डे, इट इज मिड डे, इले मिदी, इले मिदी। नाउ इले मिनुई, इले मिनुई हो गया क्या? मिनुई इंडिया में इले मिनुई होने वाला है, इले मिनुई। ओके नाउ व्हाट, इले तेजाख, क्या बोलेंगे? 13 आवर, इले क़ेज़ाख, इले क़ेज़ाख, इले क़ेज़ाख। 13, दो मतलब क्या हो सकते हैं? मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, बट लेट्स सी हिंट क्या है हमारे पास। इट इज 2 PM नाउ। कैतोज़ाख अलग तरीके से बोलेंगे। ओके इले कैतोज़ाख 14 आवर फॉर्मेट में बोलेंगे हम। इले कैतोज़ाख 3 बजे को क्या बोलेंगे? 3 PM को इले कांस। क्यों? 15 आवर्स, इले कांज़ाख, इले कांज़ाख। और इले सेज़ाख 16 आवर्स, 12 और 4 क्या होते हैं? 16 को क्या बोलेंगे? 16 को इले सेज़ाख, इले सेज़ाख। अब यहाँ पे इले दीसतक 17 इले दीसतक, इले दीसतक। आप लोग पॉज करिए वीडियो को स्लोली, फिर रिवाइज करिए, पॉज करिए, रिवाइज करिए। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। इले दीज उइतक, इले दीज उइतक, इले दीज नफ अक, इले दीज नफ अक, इले वां, इले वां अक, इले वां अक, इले वां तक 20 आवर। ओके नाउ 21 इले वां तेत्यूनक, इले वां एत्यूनक, इले वां एत्यूनक, एत्यून अक। ओके नीचे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए। वां एत्यूनक, वां एत्यूनक, इले वां एत्यूनक। और इले को छोड़ना भी है तो खाली नंबर को वान एत्यूनक, वान एत्यूनक, वान एत्यूनक, वान एत्यूनक, वान एत्यूनक, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 नाउ इले वान ड्यू, 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 ड्यूज है नहीं है। इले वान ड्यू, इले वान ड्यू अक, 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 इले वान त्वा, इले वान त्वा अक, इले वान त्वा 21 23 इले वान त्वा अक, इले मिनुई, इले मिनुई। और 2:50 को क्या बोलेंगे? अगर इवनिंग का हिंट दे रहे हैं, इट इज 2:50 PM बोल रहे हैं खासतौर पर, तो इले कैतोस साइन काउंट। क्यों 50 हो रहा? 14 आवर 50, 14 आवर 50 बोल रहे हैं हम, तो इले कैतोस साइन काउंट, साइन काउंट। 6:25 पता नहीं मॉर्निंग है कि इवनिंग है, बट स्टिल हिंट है, इट इज 6:25 PM। इले दीजुइट अक वन वन साइंक, वन साइंक, इले दीजुइट अक वन साइंक। दीजुइट क्या मतलब? 18, 18 क्यों? 12 + 6, राइट। नाउ 4:35 it is 4:35 इले says अक strong साइंक, इले says अक strong साइंक, इले says अक strong साइंक, इले says अक strong साइंक। अब 8:50 को हिंट क्या है? PM बोल रहे हैं, तो हम 8:50 PM को क्या बोलेंगे? वैन वहाँ एक साइन कौन, इले वैन एक साइन कौन। 8:50 मतलब 12 + 8 20 और उधर 50। वैन एक साइन कौन, वैन एक साइन कौन। 8:30 को क्या बोलेंगे? अदमी, अदमी। 8:30 को 8:30 को क्या बोलेंगे? उइट अक एदमी, उइट अक एदमी 8:30 को। 3:30 को क्या बोलेंगे? त्वाज, त्वाज, इले त्वाज अक एदमी। याद रख लीजिए, मैंने प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा, त्वाज है। ओके दूज और त्वाज, त्वाज है। और इले त्वाज अक एदमी। नाउ 2:30 इले दूज अक एदमी, इले दूज अक एदमी, इले कैट, इले कैट अक एदमी, इले कैट अक एदमी, इले कैट अक एदमी। 3:30 को क्या बोलेंगे? इले कैंस अक ट्रॉन्ट। अच्छा एदमी नहीं बोलेंगे, अब हम क्या करेंगे? नए स्टाइल में, नए फॉर्म में, नए तरीके से बोलेंगे। नए तरीके मतलब मोनो ऑप्शन है हमारे पास, हम ये ऑप्शन यूज कर रहे हैं सीखने के लिए। इले कैंस अक ट्रॉन्ट, इले कैंस अक ट्रॉन्ट, इले कैंस अक ट्रॉन्ट। 4:30 को क्या बोलेंगे? इले सेज अक ट्रॉन्ट, इले सेज अक ट्रॉन्ट, इले सेज अक ट्रॉन्ट। 5:30 को क्या बोलेंगे? इले दिस विथ, इले सॉरी 5:30 is 17, तो इले दिस सेट अक ट्रॉन्ट, इले दिस सेट अक ट्रॉन्ट, इले दिस सेट अक ट्रॉन्ट। अब 2:15 हाँ अब यहाँ पे आएगा
2:15, 2:15, 2:15, 2:15 बोल रहे हैं. तो हाउ यू से इन फ्रेंच? Il est 12h15, il est 12h15, il est 12h15. ख पहले टी बाद में. Il est 12h15. ओके, 3:15, 3:15 कैसे बोलेंगे? 3:15, 3:15 कैसे बोलेंगे? Il est 3h15, त्वा नहीं, 3h15, il est 3h15, il est 3h15, il est क्या बोलेंगे? Il est 4:15, it is 4:15, il est 4, il est 4h15, il est 4h15, il est 4h15. टी पहले, खा बाद में. 4 के लिए 4 पहले याद कर लीजिए. Il est 4h15, ओके. Il est 4h15, il est 4h15, 12:45. हाँ, 12:45 कौन से फॉर्मेट में है? अगर 24 आवर फॉर्मेट में है तो क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या पूछ रहे हो. हाँ, 1:15 बोल रहे हैं. इट इज 1:45 बोल रहे हैं. 1:45, पास्ट नहीं, 1:45. सो il est 1h, पहले बोलेंगे 1 o'clock बोलेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे क्वार्टर. सो il est 1h moins le quart, il est 1h moins le quart. ओके, 3:45, तो il est 4h moins le quart, il est 4h moins le quart. क्लास 20 डन. चलिए माइक खोल दीजिए.